friends, in this video we are going to see multiplication of vectors and in that scalar product. Scalar product which is also known as dot product and its characteristics. So before proceeding with that, I request you to do like, share and subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon for further notification of my videos. Thank you friends. So let's get started. First is scalar product. Now what do you mean by scalar product? Scalar product यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज ले लो, दोनों वेक्टर में है, यानी दोनों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दोनों का अगर प्रोडक्ट लेके रिजल्ट क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. बट इफ टू वेक्टर्स, टू फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करके अगर वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो उसे कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट विच इज नथिंग बट वेक्टर प्रोडक्ट. So this is difference between scalar product and vector product. अभी scalar product को dot product कहते हैं, यानी उसका representation form क्या होगा, दोनों vectors के बीच dot रहेगा. So this is dot. Now what is their product's value? This also you need to find out, right? So now if I take two vectors, suppose this is vector P and this is vector Q. I label this point as OP and this would be OQ with vector Q. Then the angle between these two vectors I represent it as theta. So their product, that is vector's product, that is P, vector P dot vector Q will be equal to PQ cos theta. Yani magnitude of vector P into magnitude of vector Q into cos of एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज Q और P के बीच का एंगल जो कि थीटा है. तो ये है डॉट प्रोडक्ट. अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देख लेते हैं. सो अगेन आई टेक दीज टू वेक्टर्स ओनली. सो नाउ दीज टू वेक्टर्स के प्रोजेक्शंस निकाल लेते हैं. सपोज वेक्टर Q का प्रोजेक्शन निकालते हैं ऑन वेक्टर P एंड दिस इज अ पॉइंट आई लेबल इट एज OB. And I draw projection of vector P on vector Q and I label it as point D. Here I form 90 degree and here also I form 90 degree. So if I consider right angle triangle OBQ, अगर मैं right angle consider करती हूँ OBQ और उसमें मुझे cos of angle निकालना है, यानी cos theta निकालना है. ये theta है, OQ hypotenuse है और cos थीटा क्या कहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, राइट. तो मेरा एडजेसेंट साइड क्या है OB, मुझे OB की वैल्यू नहीं पता है. हाइपोटेनस क्या है OQ, OQ की वैल्यू क्या है वेक्टर Q. सो आई जस्ट राइट इट एज Q एज आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड और मुझे OB निकालना है तो आई जस्ट शिफ्ट Q टू दिस साइड, यानी मुझे OB की वैल्यू मिलेगी Q cos थीटा, राइट. तो मैं यहाँ लिख दूँ Q cos थीटा, वेक्टर Q cos थीटा and this is complete vector P, right. Now I consider second triangle, that is ODP. Now if I consider triangle ODP, तो ये right angle है, side opposite to 90 degree is always hypotenuse, right. So OP is hypotenuse for this triangle. Then I take cos theta. So अगर मैं cos theta उस triangle के लिए ले लूँ तो मेरा adjacent side क्या है OD and my hypotenuse is OP. Now I don't know value of OD, so I write OD and OP क्या है vector P, so I take P. So I want to find OD. तो मैं P को इस साइड भेज दूंगी तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो बनेगा P cos थीटा. सो यहाँ here I'll write vector P cos theta and this is complete vector Q, right. So now what my first characteristic says, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि vector P dot vector Q is P Q cos theta. I represent it in this way, which says that magnitude of first vector, magnitude
of first vector, that is vector P, dot, that is multiplied with component. This is component of vector Q, right? So magnitude of component of other vector in the direction of P, यानी ये component किसके direction में? First vector के direction में, यानी P के direction में, right? So I just write it as into component of other vector in direction of first vector. In direction of first vector. So this is my first characteristic. Then what is my second characteristic? Second characteristic says that dot product holds true for commutative law. अभी commutative law क्या होता है कि अगर वेक्टर P है और वेक्टर Q है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? PQ cos थीटा. यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर हो रहा है? नहीं. अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, P की वैल्यू 3 ले लूं एंड Q की वैल्यू 2 ले लूं मैग्नीट्यूड में, तो इफ आई डू PQ cos थीटा एंड एंगल इज 0, so cos 0 is 1, so the value would be 3 into 2 which will give me 6. और अगर मैं वही चीज QP cos थीटा निकालूं तो what I would get? Q is 2, P is 3, so it will give me again 6 because angle between them is 0 and cos 0 is 1. तो इससे ये प्रूव होता है PQ cos थीटा लिखो या QP cos थीटा लिखो, दोनों सेम ही रिजल्ट देते हैं. तो here I can write as QP cos थीटा और यहाँ QP है, so I can write as vector Q into vector P is nothing but QP cos theta, and from this two are equal, so I can write here second characteristic as vector P dot vector Q is equal to vector Q dot vector P. So this is commutative law. अभी distributive law क्या कहता है? Distributive law कहता है कि अगर 3 vectors हैं, suppose vector A, vector B और vector C है, और vector A is multiplied with vector B plus vector C, तो इसका रिजल्ट रहेगा vector A dot vector B, vector A dot vector B और A को C के साथ भी दे देंगे, तो vector A dot vector C. तो ये कहता है distributive law. Now fourth says special cases for dot product. For dot product. अभी ये क्या होता है? इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा. So I'll write the formula here for your convenience. That is vector P dot vector Q is PQ cos theta. This formula I would be using it repetitively, and my first case says that अगर मेरा थीटा 0 है तो cos 0 is 1. तो यहाँ मैं अगर cos 0 1 लिख दूं तो मुझे ये वैल्यू क्या मिलेगी? वेक्टर P dot vector Q would be just PQ. Now let's understand it in a better way by taking unit vectors. For example, अगर मैं यहाँ एक यूनिट वेक्टर ले लूं, ये वेक्टर i कैप है. अभी एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का 0 है, मतलब एक वेक्टर के ऊपर ही दूसरा वेक्टर रहेगा, तभी जाके एंगल 0 मिलेगा, राइट? तो ये i कैप है और सेकंड यूनिट वेक्टर उसी के ऊपर है, तो इट वुड बी i कैप into i कैप. सो हियर I get i कैप into i कैप. सेम अगर मैं j वेक्टर ले लूं तो j वेक्टर का भी j वेक्टर के साथ ही 0 एंगल बनेगा, राइट? वरना दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऐसा कुछ बनता है, राइट? लेकिन यहाँ दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे. So this would be nothing but j cap into j cap, and here if I take third vector, it would be k cap into k cap. So here j cap into j cap is equal to k cap dot product k cap, which will give me value 1 because these are unit vectors. So it will give me value as 1. Now second case says that if my theta is
180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 180 कहाँ आता है? अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। दिस इज 90 एंड दिस इज 90, सो 90 प्लस 90 विल गिव मी 180। तो ये आई कैप है, तो इसके अगर एंटी पैरेलल में ले लो तो ये माइनस आई कैप रहेगा, राइट? तो ये क्या कहता है कि cos 180 इज -1। तो अगर ये cos 180 की वैल्यू cos थीटा में पुट करूं -1, तो मुझे मिलेगा वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज -p, राइट? सो दिस इज सेकंड स्पेशल केस। मतलब अगर मैं i इंटू माइनस आई कैप लू तो मुझे -1 वैल्यू मिलेगी, राइट? मतलब इफ आई डू j cap into dot product with minus j cap, it will give me -1. So this is second special case. Now if I take third special case, third special case कहता है अगर थीटा 90 है यानी 90 डिग्री, यानी ये, तो मेरा cos 90 क्या रहेगा? cos 90 होता है 0। तो अगर मैं ये 0 वैल्यू यहाँ पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? cos 90 is 0, तो 0 into pq will give me 0। तो यहाँ पे मुझे वेक्टर p डॉट वेक्टर q 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। यानी अभी ये i वेक्टर है, मुझे एक ये वेक्टर लेना है और सेकंड ये वेक्टर ऐसे लेना है कि उसके बीच का एंगल 90 मिले। सो दिस इज वेक्टर i यूनिट वेक्टर एंड दिस इज j यूनिट वेक्टर। So I dot j is always 0, right? वही अगर मैं j with j and I भी लूँ तो 0। तो ये देख लेते हैं कि कैसे हो गया। So this special case will give you an result as if I cap into j cap is equal to j cap into k cap, which is equal to k cap into I cap, which is equal to 0। मतलब कि अगर यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ लो तो तभी कुछ वैल्यू मिलेगी, बट इफ वी टेक अपोजिट यूनिट वेक्टर कंपोनेंट्स दैट इज I with j, j with k and k with I, it will always give me an value 0। तो ये है फोर्थ स्पेशल केस। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ स्पेशल केस क्या कहता है। फिफ्थ स्पेशल केस कहता है कि अगर वेक्टर p और वेक्टर q इक्वल है, अगर वेक्टर p और वेक्टर q इक्वल है तो व्हाट वैल्यू आई वुड गेट, यानी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एंड बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड, सो आई कैन जस्ट से दैट it is either vector p square or it is either vector q square. So this is fifth case. Then moving on to sixth case. Now the sixth case, अभी sixth case क्या कहता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स लूं और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लूं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। So now if I take two vectors, suppose I take vector p as px I cap plus py j cap plus pz k cap and I take second vector q as qx I cap plus qy j cap plus qz k cap। So ये दोनों वेक्टर्स है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। So it would be vector p dot vector q will give me px I cap plus py j cap plus pz k cap, and this I have copied. It would be multiplied with this, so it would be qs I cap plus qy j cap plus qz k cap, right? Now I multiply it one by one. So ये टर्म का ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, then it would be added with this term and this term's product. It would be added then with this term and this term's product. तो इसको कैसे लिखेंगे? px I cap will be multiplied to this, that is qx I cap plus qy j cap plus qk qz k cap. It would be added with py j cap
will be multiplied again with qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. It would be added with pz k cap, qx I cap plus qy j cap plus qz k cap, right? And then if I start multiplying, if you know about these three cases, here I clearly mentioned that I और I का product, I के साथ product, J के साथ product, K के साथ product will give me 1, and I, J, K, their product will always lead me to 0. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैं ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो it would be I into I. So this term will give me 1, but I into j will give me 0. I'll write it for 1 just for your reference. That is, कैसे होगा? px I cap will be multiplied with qx I cap plus qy px, that is I cap into j cap plus px qz I cap into k. तो इसमें ये मैंने पहले टर्म को एक्सपांड किया है, ये वाले टर्म को, तो इसमें i इंटू आई की वैल्यू ही मुझे 1 देगा, राइट? बट ये यहाँ i इंटू जे है और यहाँ i इंटू के है, तो i इंटू जे और के, i इंटू के विल गिव मी 0, यानी ये टर्म और ये टर्म कट हो जाएगा. तो वैसे ही ये वाले एक्सप्रेशन, ये वाले टर्म में भी वही होगा और ये वाले टर्म में भी वही होगा. तो मुझे यहाँ से ये टर्म मिलेगा, यहाँ से ये टर्म मिलेगा, बिकॉज j इंटू जे विल गिव मी 1, और यहाँ से ये टर्म मिलेगा, दैट इज k इंटू के विल गिव मी 1, राइट? सो बाय कंसिडरिंग दोस थ्री टर्म्स, व्हाट आई गेट? सो आई गेट p dot q as px into qx, and this I into I is giving me 1, so I'll just multiply with 1. Then here plus py qy and j cap into j cap will give me 1, then pz and qz from here, and then k cap into k cap. So this term will give me 1. So my answer would be px qx plus py qy plus pz qz, which is nothing but vector p dot vector q. So this is how we derive dot product for two vectors which have rectangular components of itself, like in this way. So the dot product of vector p into vector q will give me px into qx plus py into qy plus pz into qz. So this is the sixth special case which we have. Quick glance on it. Okay. So now I write the sixth special case here. It says that if I have two vectors with rectangular components, their dot product would be equal to px qx plus py qy plus pz qz. Then my seventh special case says that कि अगर vector AB is equal to vector AC, अभी यहाँ पे vector AB into vector B is equal to vector AC. तो इसमें क्या होता है कि we mostly vector A is not equal to 0, guys, and then mostly what we do that we try to cut this two A's and we get it as vector A is equal to vector B. But this never holds true. It is never always true that vector B will be always equal to vector C. It is not true. So, but as you know that if I rewrite this expression, I can get it as vector AB, और इन दोनों terms को यहाँ भेज दूँ तो ये minus vector A dot C मिलेगा, right?
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करूं बाय दिस थर्ड स्पेशल केस, मैं ऐसे लिख सकती हूँ वेक्टर a इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर c, जो कि मुझे यही मिलेगा, राइट, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इसके बीच, तो मैं उससे वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c लिख सकती हूँ। तो ये एक्सप्रेशन में क्या बताता है, एक तो ये जीरो रहेगा विच इज इक्वल टू जीरो, तो एक तो ये जीरो रहेगा वरना ये जीरो रहेगा, सो आइदर वेक्टर a विल बी जीरो और वेक्टर b माइनस वेक्टर c विल बी जीरो। इसका मतलब अगर ये वेक्टर जीरो बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, right? So this says that vector A is perpendicular to vector B minus vector C. But it is not mandatory. अगर सिर्फ ये भी जीरो रहा तो भी perpendicular ही रहेगा, but it's not mandatory that vector B minus vector C should be zero. So these are all 7 special cases which are nothing but the characteristics of scalar dot product. In upcoming video, we will cover vector product and its characteristics. So keep watching. Thank you guys and have a safe day.